Good evening, dear students. Our next topic in classical mechanics is Hamiltonian and Lagrangian formulation comparison. So, in this topic, we are going to compare the two different formalism, which are Lagrangian and Hamiltonian. And dear student, in the last portion of our lecture, we are going to conclude that which formalism is better than the other one. So, let us start. Dear student, first of all, in Lagrangian formalism, our main function which contains all of our information is Lagrangian. And Lagrangian is itself is a function of generalized coordinate, generalized velocity, and maybe time. Lagrangian may be a function of time or not. It depends on our nature of system which we are considering or about which we are going to solve the Lagrangian equation. And dear student, in Hamiltonian formalism, our main function is Hamiltonian, which is function of generalized coordinate and its canonically conjugate momentum or generalized momentum and possibly time. Again, Hamiltonian may have dependence on time explicitly and it may not have this dependence. अगर हम किसी सिंपल सिस्टम की बात करें तो इट में अपीयर्स टू अस कि देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन फंक्शन बिकॉज this is generalized velocity and this is generalized momentum. Let's we have a very simple system, very a natural system, spring mass system. In spring mass system, our generalized coordinate is say x and generalized velocity will be our x dot. Then here generalized momentum will be mv. सो हमें लगता है कि कोई विशेष इसमें डिफरेंस नहीं है कि इसमें आपने एक वेरिएबल है हमारा एक्स डॉट उसको मास से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वो मास से मल्टीप्लाई नहीं है एंड इट अपीयर्स दैट बोथ आर द सेम थिंग. देयर इज जस्ट ए डिफरेंस ऑफ स्केलिंग फैक्टर ऑफ मास m. बट डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस q डॉट एंड p. एक्चुअली हमें आदत पड़ी हुई है वेलोसिटी और मोमेंटम की. जब भी हम वेलोसिटी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक्स डॉट आता है, मोमेंटम बोलते हैं तो एम एक्स डॉट आता है. बट डियर स्टूडेंट, हमें मालूम होना चाहिए कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स ही नहीं होता. मान लीजिए हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा. इन दैट केस आवर जनरलाइज मोमेंटम विल नॉट बी स्केल्ड बाय द मास. In the same way, it may be possible our generalized coordinate may be charge and generalized velocity will be electric current. Then generalized momentum will be totally different. So dear student, generalized velocity and generalized momentum are not so relatable quantity which we usually thought. Now let's come to the second point. If we have Lagrangian and Hamiltonian of any system, then our next step is to find out the required information, and our modus operandi or the method of finding out the required information is to inputting the function into our differential equation. In Lagrangian formalism, we have second order differential equation. So let's assume we have a system with n degrees of freedom. In that case, we require n second order
differential equation. And in Hamiltonian formalism, dear students, we have to solve 2n first order differential equations. Mathematically, it is very justifiable. A second order differential equation is equivalent to 2 first order differential equation. And if we have a system with n degrees of freedom, naturally we have to solve n second order differential equation in Lagrangian formalism and 2n first order differential equation. This difference is very crucial because it is not so easy to solve a second order differential equation. This is the main problem with this formalism. It does not mean that this formalism is not good. In the last portion of the lecture, we are going to conclude our whole comparison. But this is one of the problem with the Lagrangian formalism, that we have to solve second order differential equation. So, it is very handy to solve first order differential equation as compared to the second order differential equation. The third difference is, as we have to solve differential equation, and from the knowledge of our mathematics, we know that we require some initial conditions. For the solution of any differential equation, we need some initial conditions. Even in Newtonian mechanics, we need some initial condition. For example, we have to solve Newton's second law. In that, we must know the initial velocity and the initial position of the particle. Then we are able to solve the problem. In this case, for solving n second order differential equation, dear student, we must need 2n initial conditions. In Hamiltonian formalism, we also need 2n initial conditions. But dear student, these 2n and these 2n are different. Here we need n q's and n q dots, means we need initial generalized coordinate which are any number and initial generalized velocity which are also any number, or equivalently it may be possible, or it is the same thing, that we need 2n q's, because if we need two different q's, say I know the value of q at some time t and the value of q at a later time t plus delta t, this one is say q naught and this one is q. Here we require two q's, but dear student, this is nothing but one q and a velocity. If I have the difference of these two q and this time interval, I will be able to calculate the generalized velocity. So dear students, these are two equivalent piece of informations. In this case, we require n generalized coordinates and n generalized momentums. These are the initial conditions required in Hamiltonian formalism. Again, these initial condition doesn't make a big difference, because here we require 2n initial condition, here we require 2n initial conditions. So this difference does not make a big difference between these two formalism. But if you go a bit deeper inside this, you will start smelling about the quantum mechanics. In the main extra advantage of Hamiltonian formalism is its applicability in quantum mechanics. So dear student, you can see what is this q, what is this p, its position, its momentum for a simple particle which is moving in space, position and momentum. And you know
uncertainty principle, which is the relation regarding the product of these two quantities, not these two quantities. So, this point has its own leverage in quantum mechanics. Now, the next point is, dear student, after solving this second order differential equation, what we get? We get Qt, and if we have n second order differential equation, then our solution will be different Q's. So, this Qt will be our solution of second order differential equation, and in this case the solution of our Hamiltonian 2n first order differential equation will be in terms of Qt and Pt. प्यारे बच्चों, अब ये जो Qt है, this will give us the required information. If we have to find out the position, it will give us the position. If we have to find out the velocity, it will give us velocity, and whatever the parameter you require, it will be given by this Qt. Now we have each and every piece of information in this Qt. As time advances, this Qt will evolve, or this Qt will move in configuration space. ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये टाइम के साथ जब चेंज होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में एक पॉइंट के रूप में मूव करेगा. यहां पर जो पॉइंट मूव करेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि दैट पॉइंट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू वेरिएबल, नॉट बाय सिंगल वेरिएबल एज इट वाज द केस इन Lagrangian formalism. Two points or two pieces of information for a single point is required, which are generalized coordinate and generalized momentum. As time evolve or advances, Q and Pt both will advance. The motion of that point is in phase space. So, in Lagrangian formalism, this Qt or the point will advances in configuration space, and in Hamiltonian formalism the point will advance in phase space. Phase space is a two-dimensional space. As you know, for a single point you require two variables, and in this case for a single point we require one variable. So, configuration space has dimensionality of 1 and this phase space has dimensionality of 2. But dear student, please do not confuse with the dimensionality like ordinary dimensionality in space. These two dimensions are not the space dimensions. This one is this, it may be space, it may be momentum, but it is not always the case. If we have the example of an electric circuit, in that case this will be charge, this will be different quantities. These are not usual our Euclidean space coordinate. And also ये भी ध्यान रहे कि इसको ये कहना कि इसमें एक डायमेंशन, इसमें दो डायमेंशन है, इस डायमेंशन का मतलब वो डायमेंशन नहीं है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं. Now suppose we have a point in configuration space. मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए. सो प्यारे बच्चों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया. I have a spring mass system, very simple example of harmonic oscillator, and all the surfaces are frictionless and there is no any loss of energy is there. These are some assumption, and this spring is an ideal spring, and no any kind of energy loss will be there, or no any viscous force is present here. In this case, if I draw the graph of Q versus T, so this type of graph will appear. Okay. And dear student, if I increase its amplitude, means I push this mass with much greater force and leave it freely, the graph will be like this. This is our time axis. देखिए बच्चों, इसको आप कॉन्फ़िगरेशन स्पेस मत समझिए, इसको
आप वेरिएशन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विद टाइम समझिए। मैंने यहां पर, क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें तो 2 डायमेंशन हो गए, ये एक्चुअल में ये डायमेंशन नहीं है, मैंने सिर्फ क्यू का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा है, बस ये मैंने टाइम एक्सिस ले लिया इसमें। बाकी अगर आप वेरिएबल क्वांटिटी देखेंगे केवल क्यू है। ओके, अगर हम इसको कम फोर्स अप्लाई करके और फिर इसको छोड़ते हैं, अगेन इट विल ऑसिलेट विद ए स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड दिस विल बी इट्स ग्राफ। नाउ what about its phase space diagram? Dear student, its phase space diagram will be, say, along this axis I am taking P and along this axis I am taking QT. Its diagram will be like this in elliptical form. This is its phase space diagram, and in this case the time axis is not taken because time is considered in this graph कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा दिस द पॉइंट विल मूव ऑन दिस इलिप्स। इफ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इफ यू हैव स्मॉलर एम्पलीट्यूड देन आवर ओरिजिनल वन देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। The basic difference which we have to observe in these two diagrams is that at a given time and for a given system, please have emphasis on this point, for a given time and for a given system, it has a unique phase space diagram. You cannot have the same diagram for a different system. If I have a system which has the same phase space diagram, then dear student, this different system will be identical with our original system. It means हमारे पास जो सिस्टम है उसका ये डायग्राम रहेगा और वो यूनिक रहेगा। अगर कोई भी इसमें रैंडमली एक पॉइंट आप ले लेते हैं, जैसे आपने एक रैंडमली एक पॉइंट ये ले लिया, इस पॉइंट से केवल एक ही आपका ये ग्राफ पास होगा, दूसरा ग्राफ इसमें से पास नहीं हो सकता। हां, ये हो सकता है कि अगर हमारा हैमिल्टोनियन टाइम का फंक्शन है तो यहां से दूसरा ग्राफ पास होगा, परंतु वो किसी अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पास होगा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आई हैव ए सिस्टम से दिस वन and this system has a Hamiltonian which is a function of time. मान लीजिए इसको कुछ हम चार्ज अप्लाई कर देते हैं इस बॉडी को and we apply an electric field and that electric field is a function of time. In that case it may be possible कि आज इसका ग्राफ ऐसा है, कल इसका ग्राफ दूसरी तरह का हो और वो यहां से पास हो जाए, परंतु एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम एक टाइम पर एक पॉइंट पर एक ही ग्राफ पास होगा। और अगर हमारा हैमिल्टोनियन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो जो ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम से कल परसों या जो कल चला गया उस पर कोई भी यहां पर ग्राफ पास नहीं होगा। अब इस पे आ जाइए। अभी अगर हम इसकी बात करें कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की, पहले बच्चों आप इस पॉइंट को देखिए, यहां से तीन पाथ पास हो रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉइंट से कितने भी वहां से पाथ जा सकते हैं। ठीक है, यह भी एक इसका बच्चों बड़ा इसमें डिफरेंस है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये फिर इसमें अच्छा कौन है। देखिए भाई, एक सबसे पहली लाइन जो इन दोनों के बारे में मैं कहूंगा, दोनों इक्विवेलेंट हैं। सेकंड, कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। आई कैनॉट से लैग्रांजियन इज फार बेटर देन हैमिल्टोनियन और वाइस वर्सा, नेवर, बोथ आर इक्वलेंट, दोनों का अपना अपना काम है। ऐसे बहुत से सिस्टम है जिनका लैग्रांजियन होता है परंतु हैमिल्टोनियन नहीं होता।
ऐसे ही बहुत से सिस्टम है जिनका हैमिल्टोनियन होता है, लैग्रांजियन नहीं होता। तो फिर कंपैरिजन क्यों किया? कंपैरिजन किया एप्लीकेबिलिटी पे, ये ज्यादा एप्लीकेबल है एज कंपेयर टू लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन। और इसकी एप्लीकेबिलिटी भी कहां है? अगर आप केवल क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो फिर इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, जब हम लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब हम पर्टर्बेशन सिस्टम करेंगे, पर्टर्ब्ड सिस्टम करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी, जब हम क्योटिक सिस्टम पढ़ेंगे, तब इसका हमें इंपॉर्टेंस क्लासिकल मैकेनिक्स में मालूम पड़ेगा। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हमें इसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगा। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स से बाहर जाएंगे, हैमिल्टोनियन, वहां पर एक ऑपरेटर होता है। और प्यारे बच्चों, हैमिल्टोनियन का जो एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, प्लाज्मा फिजिक्स में, वो बड़ा ही इनॉर्मस है। तो बस डिफरेंस ये है, दोनों काम ठीक करते हैं, दोनों का काम एक ही है, परंतु इसका एप्लीकेशन ज़्यादा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लैग्रेंजियन के बाद अब हमें हैमिल्टोनियन पढ़ना चाहिए। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अब हम आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में हमने गैलीलियन मैकेनिक्स पढ़ा, फिर हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा, फिर लैग्रांजियन एंड नाउ हैमिल्टोनियन। सो हैमिल्टोनियन इज एक्चुअली आवर path to our more advanced form of physics like quantum, statistical, plasma and so on. So this was the comparison between Lagrangian and Hamiltonian formula. Thanks for watching the video.